graduation day and आपको certificate तो सब मिल गए and as you can see, hello media. Hi. All right. So anybody wants to first talk about the experience और क्या है और आप में अंदर ऐसी क्या बात पैदा हुई जो आपने 1 महीने या 2 महीने जब भी जितनी भी ट्रेनिंग ली है. So परिणीति को मैंने बुलाया और ये भी जानना चाहती है कि इधर होता क्या है. हाँ, क्योंकि इनको इतना पता नहीं है, लेकिन फ़ोन पे मैंने सिर्फ इनको कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ आएँ और बहुत सारी लड़कियाँ यहाँ होंगी एंड दे आर लर्निंग मार्शल आर्ट, कैन यू कम, एंड शी क्विकली एग्रीज. मैं आपको बताता हूँ ये परसों की बात है एंड शी एग्रीड टू कम. सो 3 cheers फॉर हर. सो कौन आना चाहेगा पहले? हाँ, आप क्या तैयारी में आएंगे? मेहुल, पहले आप कुछ बोलना चाहेंगे? मेहुल है जो he is not a black belt anymore, he is a actor now, film star. Yeah, he did one film called Naam Shabana. Oh yeah. तो अगर आप देखोगे उसमें लिखा है कि या मेहुल कुमार as himself, मेहुल कुमार. Mehul Vora, sorry, not Kumar. Kumar is me. Okay. Probably if I change my name, I might get more roles. Please, sir. Okay. So, we all know we started after the Nirbhaya rape case. Thanks to Akshay sir and Aditya sir. You are our batch number 120. We successfully complete over 7,000 girls and women of training. Free of cost self-defense. We also have an intermediate and advanced course which is going on, which you are already well versed with if you want to join. Today we start batch number 121, 122 and 123 at 2 p.m. And we also start our first batch where there are 200 girls at Thane. What started off as one center where you are sitting right now, thanks to Aditya sir and Akshay sir, has now reached 8 centers all over India. We are going to start our second biggest center, which is going to be in Thane, which is 22,000 square feet, hopefully on 13th of June. That is what has been committed to me. And we are starting on 23rd of June, a 12,000 square feet facility in Navsari. Yeah, come on. I would like to say what Akshay sir always mentions, that our aim is to have 1,000 centers all over India, but eventually we reach at a time in our society that we don't need women's self-defense centers. There will no longer be any need for us men to teach our women self-defense, and that would be perfect. We'll shut down all the centers. That would be it. So, who's going to speak? We have one batch of NCC also which is completed. So who's the first person who's going to speak today? So they also. Yeah, please. The NCC squadron leader. Who's going to speak? Come. Aye. So that's a squadron of girls. Thanks to Aditya sir, Akshay sir, Paniti madam and Mehul sir and our spirit instructor Vipul sir. And I'm going to promise to you all that every batch of NCC, we have 3 years course. So every year we'll be sending, and like the confidence now they have got. See, we also teach them other martial arts and everything, but after coming here, this 10-20 cadets, the confidence which they have got, it's unmatched. So I would tell everybody and my all NCC cadets for 10 years every time to come to you people. Thank you so much. She's our senior most citizen in this batch. Okay.
she looks the youngest there. पहले तो मैं इन सर का अक्षय सर का मेहुल जी का आदित्य सर का मेहुल सर का और हमारे सब टीचर्स विपुल सर जतिन सर मान सर इन सब का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि इनकी वजह से आज हम ये सब कोर्स कर रहे हैं। और मैं बहुत साल से ये सोच रही थी कि लेडीज़ों के लिए कुछ होना चाहिए ऐसा ताकि वो अपनी रक्षा खुद कर सकें। नो डाउट कराटे और ये सब है, तो जब कोई बंदूक लेके आता है या कुछ लेके आता है तब हम कराटे भी उस समय शायद नहीं कर सकते। तो ये जो सेल्फ डिफेंस कोर्स है वो हम कोई भी कहाँ पर भी हो कर सकते हैं। इसलिए मैं इन सब का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि सही में इन्होंने जो भी शुरू किया है वो मिशन इनको कंटिन्यूस रहे और सब आज ये सीखना जरूरी है। ये समझ के अपने बच्चे अपने बड़ों को भी ये एडवाइस दो कि प्लीज़ ये कोर्स जरूरी करना है। थैंक यू। ऐसा है, मैं आपको बताऊं कि मुझे एक्चुअली शर्म आती है कि ये कोर्स आप लोगों को सीखना पड़ता है। सच कहूं तो ये कोर्स सीखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे जो आदमी लोग हैं इनको अकल होनी चाहिए, इनको अकल होनी चाहिए, ना कि आपको मेहनत करनी चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा वक्त है इस वक्त, तो जब कहते हैं ना जब वक्त ठीक ना हो तो खुद अपने हाथों में लगाम लेनी जरूरी है। तो यही आप लोग कर रहे हैं और बस यही मैं प्रार्थना करूंगा कि ऐसा वक्त आए कि जब आप लोगों को ये सीखने की जरूरत ना हो। ओके, सो और कौन बात करना चाहेगा? आइए आइए मैडम, आइए। You can talk from there only, madam. Yeah, you can. Then the press. Oh, the camera. Yeah, back. To the point. This batch was started after Nirbhaya. In my case, my sister was murdered 8 years back, which I still have it in me. Simple poses which they teach, I can connect to that. If she knew this, she would have been alive. So, 2 months I did to come out of it. So it takes lots of, the course is planned very well. Also, I'm a runner where I run marathons. I have to leave early morning, 3 o'clock, 3:30, where the roads are empty. Nobody's there and I need jerks. And again, I'm more confident when I'm walking on the road, I'm alone. My husband is sleeping, taking care of my son. So, thank you. Thank you to the whole. You know, a lot of people ask me कि आपको इतनी एनर्जी कहाँ से आती है कि आप इतना काम कर लेते हो, and I'll tell you honestly, I get energy from here, from you people, because जब ऐसी बातें सुनता हूँ तो you feel so much like you have to do so much of work in this country. But thank you very much. I must salute you, ladies. I must salute you.